Hey everyone, welcome to Stories of Architecture. So, in this video, we'll cover Post Modernism, New Urbanism and Sustainable Urbanism. So, ये वीडियो में हम ये तीनों टॉपिक कवर करेंगे एंड आई अर्ज यू कि आप अपना स्केच बुक एंड पेंसिल या पेन साथ में रखें क्योंकि विल ऑल्सो स्केच सम थिंग्स. ओके, सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन. Okay, so postmodernism. Finally, after completing modernism, we come into postmodernism. So it went on from 1980 AD to 1999 AD. Okay, so there are 5 aspects of postmodern urbanism. So the first being growing interest in participatory planning. तो ये एक समय था जहाँ पे participatory planning में दिलचस्पी आने लगी. पहले तो there was only an architect or an urban planner who were making decisions for the people. Now people were getting interested in participatory planning and including the community in the planning process. Then search for urbanity, urban identity and cultural uniqueness. एक जगह को क्या यूनिक बनाता है, क्या कल्चरल चीज़ें हैं जो उसको यूनिक बनाती हैं, क्या आइडेंटिटी है एक जगह की, यहाँ पे वो आइडियाज़ आने लगे. Then an appreciation of historic spaces, return of traditional urban forms. So much like postmodern architecture जहाँ पे वो वापस they were going back to old forms, इसमें भी postmodern urban design में भी appreciation of historic spaces हो रहा था and urban forms की तरफ वापस जाया जा रहा था. The fourth point is pursuit of human scale, pedestrian friendly, high density, urban and compact forms. सो एक ह्यूमन स्केल की तलाश हो रही थी जो पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली हो, हायर डेंसिटी हो, अर्बेन हो एंड कॉम्पैक्ट छोटे छोटे फॉर्म्स हो. एंड द फिफ्थ वन बीइंग स्पेक्टिकल, कमर्शलाइजेशन ऑफ बिल्ट एनवायरनमेंट. सो दीज आर द 5 एस्पेक्ट्स ऑफ पोस्ट मॉडर्न अर्बनिज्म. नाउ लेट्स लुक एट टू सम ऑफ द थ्योरीज दैट इट ब्रॉट. Okay, so the concept is eyes on the street in 1961 AD. This is one of my personal favorites, and the person who gave this concept is Jane Jacobs. It is a sociological concept by Jane Jacobs. She was an American Canadian journalist and author and activist. तो उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया. This was a very important moment in New York. उनका ये concept जो है काफ़ी important and necessary है, and I personally like this. So उन्होंने एक बुक लिखी द डेथ एंड लाइफ ऑफ ग्रेट अमेरिकन सिटीज़, जिसमें शी क्रिटिक्ड. उसमें उन्होंने ऐसे रैशनलिस्ट प्लानर्स, आर्किटेक्ट्स, ली कॉर्बूसिए जैसों की निंदा की. बेसिकली वो कहना चाहती थी कि ये सब जो हैं वो एक तरीके से गॉड की तरह एक्ट करते हैं और अपने शहर को डिज़ाइन करते वक्त और बिल्कुल भी ह्यूमन एस्पेक्ट के बारे में नहीं सोचते हैं. शी वॉज इवन टॉकिंग अबाउट द आर्किटेक्ट्स हैंड, सॉरी इन दिस केस, कि दिस शैल बी डन. उसके लिए वो उन्होंने रैडबर्न सिटी का एग्जाम्पल की एक फ़ोटो भी दिखाई उसमें, विच आई शो ऑन द स्क्रीन ऑफ ली कॉर्बूसिएज हैंड, शोइंग कि दिस विल बी डन, दिस इज़ हाउ इट शुड बी. वो एक एक्टिविस्ट थी, उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया. शी बैटल अगेंस्ट रॉबर्ट मोजेस हु वाज एन अमेरिकन पब्लिक ऑफिशियल. सो रॉबर्ट मोजेस जो है वो बहुत सारे न्यूयॉर्क के नेबरहुड्स को तोड़ करके वहाँ पे रोड्स बना रहा था, हाईवेज़ बनवा रहा था. उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी. मच लाइक जो हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे हॉस्मेनाइजेशन पढ़ा था, यूजीन हॉस्मैन जो कर रहा था, सिमिलरली रॉबर्ट मोजेस भी कुछ वैसा ही कर रहा था. And she and a lot of people fought against this, and she fought for saving West Village and Washington Square. So what were her beliefs? Her beliefs were population density can't be people on streets where there are no people at all. So population density होगी नहीं streets पे जब वहाँ पे लोग ही ना बचें. Then she believed in mixed uses, mixture of residences, workplaces, shops, bringing people out on the street at all times. तो अगर मिक्सड यूज़ होगा, वहाँ रेजिडेंशियल्स भी होंगे, वर्क प्लेस भी होंगे, शॉप्स भी होंगी, तो ज़्यादातर लोग स्ट्रीट्स पे ज़्यादा आएंगे और मुलाकातें होंगी. Old buildings provide cheap spaces for new businesses and low profit enterprises which builds community. रॉबर्ट मोजेस जो है वो पुरानी बिल्डिंग तोड़ रहा था, पर वो कह रही थी कि जो ओल्ड बिल्डिंग है वो काफ़ी सस्ते में रेंट पे दी जा सकती हैं बिजनेसेस को, लो प्रॉफिट एंटरप्राइजेस को, और उससे एक कम्युनिटी बनती है. Short blocks, a dense street networks means more opportunity for retail and more chances for neighbors to meet. तो एक पेचीदा स्ट्रीट नेटवर्क जो होगा, शॉर्ट ब्लॉक्स,
वहाँ पे ज़्यादा रिटेल स्पेसेस होंगे और लोगों की मिलने की ज़्यादा संभावनाएं होंगी. पार्क्स, वेल डिज़ाइन पार्क्स गिव ग्रेस एंड डिलाइट टू नेबरहुड. सो दिस इज़ वेरी ऑब्वियस. एक अच्छा पार्क हो तो वहाँ पे सुंदरता बढ़ती है जगह की. चिल्ड्रन, वो एक चिल्ड्रन का भी एस्पेक्ट उन्होंने लाया है यहाँ पे कि चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन साइड वॉक्स बिकम बेटर पार्ट्स ऑफ देयर कम्युनिटी. तो जो बच्चे कम्युनिटी के साइड वॉक पे खेल रहे हैं, मिल के खेल रहे हैं, तो एक सोसाइटी का एक बेहतर हिस्सा बनते हैं, कम्युनिटी का बेहतर हिस्सा बनते हैं, बिकॉज दे लर्न अबाउट शेयरिंग बाय प्लेइंग. देन द सिक्स्थ वन, आइज ऑन द स्ट्रीट, जहाँ से मैंने ये कंसेप्ट का नाम लिया है. इफ़ पीपल ऑन द स्ट्रीट आर ऑन द स्ट्रीट दे लुक आउट फॉर ईच अदर. लोग अगर यहाँ स्ट्रीट्स पे होंगे तो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं. एंड यहाँ से आया नेचुरल सर्वेलेंस, विच वी विल स्केच इट आउट ऑल्सो. लेट्स स्केच इट आउट. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अगर ये स्ट्रीट है एंड एक नेचुरल सर्वेलेंस क्या हुआ. सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द building, which is a building section in which there is something like this happening. यहाँ पे लोग जो है ऐसे बैठे हुए हैं, they are sitting, and maybe there is someone who is cycling, and there are people on the balcony here, and there are people on the terrace here, and then there's this one more building on this side which has a bay window, something like this, and there is someone here. Okay, and maybe there is a tree here, and people are walking here on the road. Children are playing here. There is some plinth here जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं. Okay, so what is happening in this case is people are looking out for each other. यहाँ से लोग जो हैं they can see what is happening on the street. So there is a sense of surveillance. People are seeing what people are interacting with each other, and there is a sense of security because लोग जब ज़्यादा होते हैं और पहचान के होते हैं तो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं. मे बी दिस गाय इज टॉकिंग विद देम. सो देर इज़ अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, देर इज़ अ सेंस ऑफ नेचुरल सर्वेलेंस, देर आर बेसिकली लॉट ऑफ आइज ऑन द स्ट्रीट. अगर जो है वहाँ पे मे बी इफ़ फॉर एग्जांपल ये सेक्शन ऐसे चेंज हो जाए, यहाँ पे केवल देर इज़ नथिंग हैपनिंग हियर, देर आर ओनली जस्ट दीज बिग टॉल ब्लॉक्स, एंड देर इज़ नो विंडो हियर और नो स्पेसेस विच आर स्पिलिंग आउट हियर. एंड यहाँ पे जब लोग कोई चल रहा होगा, यहाँ पे जब लोग जा रहे होंगे, सो देर इज़ अ ह्यूज सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी देयर. डर लगेगा, और पर्टिकुलरली रात में जब यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा, कोई नहीं होगा, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द नाइट देर इज़ नो वन. सो दिस इज़ डेड एंड दिस इज़ अलाइव. So this is what she meant, and this essentially was getting destroyed by Robert Moses, and he wanted to make it like this. So as natural surveillance is, as people move around, they would be able to see what's around. This would support diversity, low landscaping, street lights, street design, pedestrian use, removing hiding spaces. So all these things comes under eyes of the street concept, given by Jane Jacobs in her book The Death and Life of Great American Cities. She was an American-Canadian journalist who fought against Robert Moses to save West Village and Washington Square. So yeah, she was essentially a hero. Okay, so this much is in postmodernism. Now we'll move on to the next era. Okay, new urbanism. It started in 1993 AD and went on till around 2011 AD. So urban design movement, what was new urbanism? New urbanism was an urban design movement which promoted environmental friendly habits by creating walkable neighborhoods containing a wide range of housing and job types. एक अर्बन डिज़ाइन मूवमेंट था जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैबिट्स को प्रमोट कर रहा था ताकि वॉकेबल नेबरहुड्स बने, और उसमें वाइड रेंज ऑफ हाउसिंग एंड जॉब टाइप्स भी इंक्लूडेड थे. एंड उसके प्रिंसिपल क्या थे? नंबर 1 वाज वॉकेबिलिटी, नंबर 2 कनेक्टिविटी, 3 मिक्स्ड यूज़ एंड डाइवर्सिटी, 4th
mixed housing. 5th, quality architecture and urban design. 6th, traditional neighborhood structure. 7th, increased density. 8th, smart transportation. 9th, sustainability. And 10th, quality of life. सो या अगर आप ध्यान देंगे तो कितने सारे थ्योरीज में बात हो रही है पेडेस्ट्रियनिबिलिटी की एंड वॉकेबिलिटी की, कनेक्टिविटी की, डेंसिटी की, बट आई डोंट सी मच ऑफ इट हैपनिंग इन प्रैक्टिकल लाइफ. आई डोंट नो व्हाई. एनीवे, so these were the 10 principles of new urbanism, and it was an urban design movement. Now let's look into what it presented. Okay, moving on. Okay, so इसमें in new urbanism the concept is transect. It came out in 2000 AD. The concept was by Andreas Martin Duany and his wife Elizabeth Plater Zyberg. They are American architects, urban designers and planners. So the rural to urban transect is a system that places all the elements of the built environment in useful order, from most rural to most urban. Okay. So now let's look into what were the parts, what were the concept, and let's also sketch it out. Okay, so the urban transect is divided into 6 parts. So again let's sketch में हम उसको 6 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं पूरे स्पेस को. So 1 2 3 4 5 and 6. Okay, so it was divided into 6 zones essentially. So it starts with the natural zone. The T1 is called the natural zone, जहाँ पे आपका नेचर आ रही है एंड देन नेचुरल एनवायरनमेंट है, कोई सेटलमेंट नहीं है, कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है, बट फिर धीरे से देन यहाँ पे पेड़ हैं, देन देयर इज़ एक नहर जा रही है. ये बाय द वे दिस इज सेक्शन विच इज़ बिकमिंग इनटू अ व्यू, and again there is no human settlement. Then when we pass T1 it comes into T2 जहाँ पे there is a subtle change and then comes a human settlement. Okay, it is called the rural zone. Then we pass this zone, we come into the suburban zone जहाँ पे there is more of the rural houses, and slowly the vegetation is decreasing. Okay, so this is a transition and called the suburban zone. To when we move to the 4th is general urban zone. So now यहाँ पे थोड़े बड़े घर मिलने लगते हैं, more dense housing is in place. Okay, with it is now becoming more orderly. The streets slowly start to come up, which is more ordered. Okay, and more repetition is there. Then we come to the urban center zone. अब यहाँ पे जो है एक proper urban center आ गया है, which is highly organized and highly developed per se. Okay, then we come to the urban core zone where the density is essentially density and the height is off the charts. Okay, vegetation is एकदम minimum. And then there is a special zone जहाँ पे special district हो गया, which is built environment with speciality uses that don't fit into neighborhoods. So uses which don't fit into neighborhoods, maybe something very commercial or something very industrial, ये यहाँ पे आता है. सो या ऑल्सो यहाँ का प्लान जो है कुछ एज वी कैन सी, यू कैन ऑल्सो सी इन द इमेज, द रोड्स विल बी लाइक दिस एंड देन यहाँ पे वेजिटेशन एंड देन एक घर है या 2 घर हैं. ओके, then this becomes a little bit orderly यहाँ पे with the crossroad where with small houses and bigger plots. Okay, then यहाँ से फिर आ जाता है. So this is very interesting. They have shown a lot of they have segregated the whole section and called it a transect, and to look at individual transitions, I would say, how the transition is occurring. This is a good way to study how the transitions are occurring.
Okay, bigger blocks here, and then small. Again, the sketch does not have to be very perfect. You just need to understand what it conveys. Bigger roads here and bigger blocks, and then parking lots. Okay, so this is T1, T2, T3, T4, T5, T6, and then special district. So again, it's a geographical cross section of a region. So again, the region word वापस आ रहा है conurbation से Patrick Geddes से याद रखिए. Cross section of a region to reveal a sequence of environments. It allocates elements that make up the human habitat to appropriate geographical locations. So it allocates these elements to that makes up the ये पूरा एक human habitat बना रहा है, तो उसको उसमें allocate कर रहा है appropriate geographical locations में. It seeks to rectify the inappropriate intermixing of rural urban elements known as sprawl. तो ये try कर रहा है कि sprawl जो है avoid हो, एक slowly या फिर एक अच्छे वे में transition हो from the natural environment to the heavy dense urban core. Okay. This approach is essentially a matter of finding an appropriate spatial allocation of the elements that make up the human habitat. Again उसी को दोबारा rephrase किया है. ये एक approach है जो try कर रही है कि एक appropriate spatial allocation कैसे किया जाए elements का ताकि एक human habitat बन सके. So it's a very nice and interesting concept. Okay, and this much is in new urbanism. Okay, now let's move on to the next era, next and final era. Okay, so finally we reached sustainable urbanism. It started in 2000 AD and it's still going on in a way. And sustainable urbanism क्या है? Sustainable urbanism is both the study of cities and the practice to build them. Okay, very straightforward. एक शहर का स्टडी है, उसको बनाते कैसे हैं उसकी भी स्टडी है. Urbanism that focus on promoting their long-term viability by reducing consumption, waste and harmful impacts on people and place while enhancing the overall well-being of both. तो एक ऐसा urbanism जो फोकस कर रहा है लॉन्ग टर्म वायबिलिटी पे, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे, लॉन्जेविटी पे, कंजम्पशन रिड्यूस करके, वेस्ट रिड्यूस करके और हार्मफुल इम्पैक्ट कम हो लोगों के ऊपर एंड जगह के ऊपर, और उसी के साथ साथ उनकी वेल बीइंग भी एनहांस हो. और वेल बीइंग क्या इंक्लूड करता है? वेल बीइंग इंक्लूड्स फिजिकल, इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, सोशल, हेल्थ एंड इक्विटी फैक्टर्स. सो दीज आर द फैक्टर्स जो वेल बीइंग के अंतर्गत आते हैं. नाउ लेट्स सी व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सस्टेनेबल अर्बनिज्म. The conservation of identity, strengthening of neighborhood and encouragement of its cultural diversity and distinctiveness. So ये बात जो जेन जेकब्स ने भी कही थी डाइवर्सिटी के बारे में, इसमें इसका ख्याल रखा गया है. नेबरहुड को स्ट्रेंथन करना, एनकरेज करना, कल्चरल डाइवर्सिटी को, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. नाउ द सेकेंड थिंग इज एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट and its interconnection with existing and new developments. So public transport को भी इसमें बढ़ावा दिया गया है, बट याद रखिए public transport को दिया गया है. It is not about the private car, it is about public transport. The third point is the wise use of resources, minimizing additional land take-up and the encouragement of moderate degrees of urban density. So इसमें urban density की बात की गई है, बट वो moderate होनी चाहिए, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा कम. एंड मिनिमाइज़ किया जाए, लैंड ज़्यादा लैंड का ज़रूरत ना पड़े, ये भी ख्याल रखा जाए. ओके, द फोर्थ पॉइंट इज़ सेफ गार्डिंग एंड इंटरकनेक्टिंग ग्रीन स्पेसेस विद नेटवर्क, वर्किंग टूवर्ड्स क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड द कंजर्वेशन ऑफ पब्लिक स्पेस. ग्रीन स्पेसेस का ख्याल रखा जाए, उनको कनेक्ट किया जाए एंड क्वालिटी रखा जाए, कंजर्व किया जाए पब्लिक स्पेस को. द फिफ्थ पॉइंट इज़ द एश्योरेंस ऑफ सोशल हार्मनी एंड advancement, social and functional interactions. So social harmony हो, एक शांति बन रहे और interactions जो हैं वो उससे बढ़त ही हो human society की. Sixth point is safeguarding existing jobs and creating new and innovative ones. Job security and नए jobs बनाना. Advancing a culture of discourse, एक ऐसा कल्चर बनाया जाए जहाँ पे बातचीत हो,
बहस ना हो या झगड़े ना हो, एक बातचीत हो और उस बातचीत करके मसले सुलझाए जाएं. There should be a good discussion between people. The eighth point is creating long-term partnership between community and public and private sectors. So एक relationship बने community की, government की और private sectors की. Then the ninth point is participating in lifelong learning process, seeing urban life in its wider context. So एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस है जिसमें ज़िंदगी को, एक अर्बन लाइफ को एक कंटेक्स, बड़े कंटेक्स में देखा जाए, सिर्फ शहर के लिए नहीं, एक कैसे वो एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट कर रहा है, धरती को इम्पैक्ट कर रहा है. या सो दिस इज़ द वाइडर कॉन्सेप्ट. सो ओके, so this was sustainable urbanism. Now let's look at one example of it. Okay, so the whole final thing comes to this. It's Highline, 2009 AD. So Highline was a project in New York, जिसका आइडिया आया था जोशुआ डेविड एंड रिचर्ड हैमन को. They founded Friends of the Highline, which is a group called the Friends of the Highline. इन्होंने वो ग्रुप फाउंड किया. So Highline क्या था? Highline is basically एक elevated linear park, greenway है, and it is an urban renewal scheme for unused railway trail going through the city of Manhattan. So न्यूयॉर्क में मैनहट्टन में एक पुरानी रेलवे पटरी थी जो एलिवेटेड थी, वो जा रही थी, बिल्कुल भी यूज़ नहीं होती थी. वहाँ पे लोग कूड़ा फेंकते थे या फिर इट वो अबैंडेंड हो चुकी थी, इट वाज नॉट इन यूज़. एंड वहाँ पे अनरूली एलिमेंट्स होते थे, लोग दारू पीते थे, टाइम पास करते थे. एंड वो जिस नेबरहुड से पास थ्रू करती थी उनको दिक्कत थी उसके वहाँ से. तो रैदर देन डिस्ट्रॉइंग द एलिवेटेड रेलवे ट्रैक्स, दीज पीपल जोशुआ डेविड एंड रिचर्ड हैमंड, दे केम अप विद द आइडिया ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग स्पेस इनटू एन अर्बन रिन्यूअल स्कीम हो इस जगह की. हाउ टू हैव एन एडेप्टेड रीयूज ऑफ द स्पेस सो दैट उसको डिस्ट्रॉय भी ना करना पड़े उस जगह को. तो उसके एग्जीक्यूशन के लिए एक तो पहले मूवमेंट चलाया गया फ्रेंड्स ऑफ द हाईलाइन का, लोगों में अवेयरनेस लाई गई, लोगों को इसके बारे में पता चला कि इसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं. एंड देन जब फाइनली अप्रूव हुआ, जो एडमिनिस्ट्रेशन में अमेंडा बर्डन है उन्होंने इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया. तो उसमें उसके एग्जीक्यूशन के लिए लोग आए, जो लैंडस्केप आर्किटेक्ट जेम्स कॉर्नर, आर्किटेक्चर फर्म वॉज डिलर स्कोफिडियो प्लस रेनफ्रो, देन गार्डन डिज़ाइनर पिएट ओडुल्फ जो हैं, ये लोग ने एग्जीक्यूट किया. सो इसको डिज़ाइन मोटिवेशंस क्या थे इसके, किया क्या गया डिज़ाइन के लिए. तो दे रीपेव द लाइन विद कॉन्क्रीट प्लांट्स टू अलाउ वाटर टू फ्लो थ्रू द फ्लोर, अलाउिंग प्लांट्स टू इंटरमिंगल थ्रू आउट द साइट. Second, slow down New Yorkers by inserting enjoyable sitting areas and meandering paths, as well as flexible open spaces to host various activities, passive and active programs. Then third one is maintaining the highline scale as an antithesis to the ever developing paradigm of Manhattan. So उन्होंने ये एक सस्टेनेबल प्रोजेक्ट ही हो गया क्योंकि वो जगह को तोड़ना नहीं पड़ा, वो उसका खर्चा बच गया डिमोलिशन का, एक एडेप्टिव रीयूज हो गया. हिस्टोरिकली भी वो सिग्निफिकेंट थी तो उसको भी प्रिजर्व कर लिया गया. देन एक एग्जीक्यूशन के दौरान भी जब कंक्रीट पेवर्स उसमें डाले गए, ये सब डाले गए ताकि प्लांट वहाँ पे उग सकें, तो एक ग्रीन एनवायरमेंटल एस्पेक्ट भी आ गया. स्लो डाउन न्यूयॉर्कर्स बाय इंसर्टिंग एंजॉयबल, तो लोगों को जो न्यूयॉर्क जो काफ़ी तेज़ ज़िंदगी है वहाँ पे, पर उनको एक ठहराव देने के लिए, बैठने की जगह देने के लिए, एक ग्रीन स्पेस देने के लिए, एक साइकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी के लिए ये जगह बन गई. देन मेंटेनिंग द हाईलाइन स्केल, तो ये एक आर्किटेक्चरल एंटीथीसिस भी है क्योंकि मैनहट्टन जो है उसकी स्काईलाइन इतनी ऊंची है, इतनी बड़ी है, बट जो हाईलाइन है इट इज़ वेरी लो डेंस एंड हॉरिजॉन्टली फैला हुआ है. सो दिस इज़ द प्रोजेक्ट विच ट्रूली शोज सस्टेनेबल अर्बनिज्म. And it also shows how people can partake in the development of a neighborhood, of a city, and if the government and the public institutions allow this, this can become a really beautiful project, and it can help the community in that area. So this project is a perfect example of the interaction between public, private and community. आप यू कैन ऑल्सो सी द पिक्चर्स ऑन द स्क्रीन जो अभी आप देख रहे होंगे, बिफोर आफ्टर एंड ऑल द पीपल इन्वॉल्व के आपने देख लिए होंगे. ओके, हे एवरीवन. सो फाइनली
हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ अर्बन डिज़ाइन एंड ऑफ द वर्ल्ड फाइनली कंप्लीट हो गया. बहुत लंबी जर्नी थी. या इट वाज रियली टायरसम. इजिप्शियन starting from Egyptian to new sustainable urbanism तक long journey. And I hope these videos really helped you to understand the history and theory of urban design. I really enjoy talking about history and this topic. And I want to make videos on the further topics as well. Next video definitely इंडिया का होगा, जिसमें प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस कवर करेंगे. एंड दुआ करिए कि वो एक वीडियो में आ पाए, इसको ब्रेक ना करना पड़े. आई होप ऐसा हो. एंड या सो please look out for these videos. So please, for that, subscribe to the channel and press the bell icon so that notification आपको आ जाए जब अपलोड हो. एंड या प्लीज़ शेयर द वीडियो. आई रियली वांट कि आप ये वीडियो शेयर करें. मैं ये वीडियोस जो हैं लोगों से शेयर करना चाहता हूँ. एंड मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो. दैट इज़ माई ओनली इंटेंशन. एंड सो प्लीज़ आप भी शेयर करिए. And do comment if you have any questions, or if you have any doubt, or if you like my work and have any suggestion how to change it or how to improve it. ज़रूर बताइए. मैं आपके कमेंट्स ज़रूर पढ़ूँगा. ओके. एंड चलिए, ओके देन, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.